हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं स्विस ब्यूटी वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल फॉर प्राइमर। मुझे नया नहीं मिला, सो आई थॉट वाई नॉट टू यूज दिस प्रोडक्ट जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, विच इज स्विस ब्यूटी फ्लॉलेस मॉइस्चर प्राइमर विद अमीनो। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. It is actually a very beautiful product. You know, it acts like your Smashbox का primerizer आता है ना. It is exactly dupe of that product, but बहुत ही affordable price पे. Look at the quantity and बहुत ही अच्छी आपको बड़ी सी बॉटल इसमें मिल जाती है. 649 इसकी MRP, बट काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के ऊपर ऑफकोर्स आपको आप एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ प्राइमर के जैसे लगा सकते हो. सी ऐसे तो बहुत सारे स्विस ब्यूटी के पास कंसीलर्स हैं, कंसीलर पैलेट्स हैं, करेक्टर पैलेट्स हैं. सिंस वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्विस ब्यूटी, तो इनमें दो प्रोडक्ट है मेरे पास. एक तो ये स्विस ब्यूटी सिलेक्ट रेंज में से सुपर रेडिएंट स्किन टिंट, एंड द अदर प्रोडक्ट इज दिस स्विस ब्यूटी सिलेक्ट हाई ऑन कवर लिक्विड कंसीलर. सबसे पहले तो ऑफकोर्स हम स्किन टिंट ही यूज़ करेंगे. उसके ऊपर से यूज़ करेंगे हम अपना. ओ माय गॉड, इट्स ऑलरेडी स्पिलिंग. सी, लुक एट द पैकेजिंग. इट्स अप्लाई. अच्छा, एक चीज़ और, इसमें जो शेड रेंज है दैट इज पैथेटिक शेड रेंज, एंड दिस इज देयर लास्ट शेड ऑफ दिस रेंज, एंड दिस इज 404 आलमंड ग्लो. Okay, so since it's a skin tint, definitely it's giving me that beautiful tinted effect, and it is also blending out very effortlessly. But where is my exact shade? I need my exact shade. मेरी तो स्किन इतनी डार्क भी नहीं है, यू नो. अच्छा, इसमें कोई ऐसा डार्केस्ट शेड भी नहीं है कि चलो मैं दो शेड्स परचेज करके कोई मिक्स मैच करके ही अपना शेड बना लूँ. इट्स लाइक वेरी डिप्रेसिव थिंग. We are in 2025 and still this is the darkest shade of an Indian brand, जो कि इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इतना ज़्यादा फेमस है, यू नो. यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस मेरा नेक और मेरे फेस में. स्विस ब्यूटी, वी डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम यू. प्लीज़ अपना शेड्स का थोड़ा रेंज यू नो बढ़ाइए. एटलीस्ट अपने 10 शेड्स तो लॉन्च कीजिए. इतनी अच्छी फॉर्मुलेशन के साथ. यू कैन सी माई स्किन इज लुकिंग सो फ्रेश, सो ड्यूई. इट्स नॉट लाइक ग्रीजी सी स्किन, इट्स लाइक ड्यूई फ्रेश स्किन विद अ ब्यूटिफुल पिंच ऑफ टिंट, बट द शेड इज सो बैड. मतलब मैं खुश होना भी चाहूँ तो नहीं हो पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द शेड. And let's apply this concealer. This is Swiss Beauty Select Concealer, High on Cover Concealer, and let's see इसका जो मेरा शेड है. Okay, shade is not written on the bottle. I don't know why. This is the doe foot applicator. It's huge applicator, like थोड़ा सा big applicator. And this has little bit orange in this concealer, so which means इसके साथ मुझे थोड़ी सी वो करेक्शन भी मिल जाएगी. सो what I'm gonna do कि मैं इसको थोड़ा टाइम के लिए छोड़ूंगी. यू कैन लिटरली सी कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिन है इस कंसीलर की. इट्स नॉट वेरी थिक कंसीलर, तो इसको थोड़ा टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा मुझे, ताकि ये थोड़ी सी अच्छी कवरेज मुझे दे. So meanwhile, I'm going to use this contouring product. It is not their newly launched product, but I just love this so much. इस वजह से मैंने इंक्लूड किया इस वीडियो में. This is Swiss Beauty Instant Cover Pan Stick in the shade Contour. Yeah, oh good. So I have their newly launched blushes, not very recently or newly launched, but kind of newly launched. These are Swiss Beauty Chick It Up Blush with Jojoba Complex and Lumi Matte Finish. This is how it looks like. अच्छा, इनका एक recently launch हुआ था, Dewy करके कुछ blush launch हुआ था, but since I have a lot of
ब्लशेज ऑलरेडी इन माई लाइक मेकअप वैनिटी में। आई थॉट नहीं, मुझे और ब्लशेज नहीं चाहिए, ठीक है, अनटिल अनलेस कि वो बहुत ही कोई एक्साइटिंग चीज़ उसमें हो, तो मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा, इस वजह से मैंने उनको नहीं परचेज किया। सो आई हैव लाइक व्हाट आई हैव न्यू विच आई हैव रिसेंटली बॉट फ्रॉम स्विस ब्यूटी इज दीज ब्लशेज, are these blushes, Check It Up blush. Okay, so एक तो ये शेड है 06 buff with rose and the second shade is shade number 02 Showstopper. This is the shade Showstopper. It's very bubbly bright सा pink. I don't use these much brighter pink on my face because I think ये मुझे wash off करेगा. So I'm gonna use this shade buffed with roses. This is how it's very pretty. Okay, so let's apply this. Yeah, कंसीलर को थोड़ा टाइम, अगर आप बहुत ही थिन कंसिस्टेंसी का कंसीलर हो तो उसको कुछ टाइम के लिए अगर हम छोड़ देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है उसकी पिगमेंटेशन में, उसके कवरेज काफ़ी बेटर हो जाती है। So let's apply little bit. Yeah, it's not little bit. Okay, so for my brows, I'm going to use this Swiss Beauty की Micro Precision Eyebrow Pencil. I have two, ताकि आप लोगों को बता पाऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ इसको. This is my go-to eyebrow product. See? ओके, नाउ इट्स द टाइम टू मैं अपने फेस को जल्दी से सेट कर दूँ, अदरवाइज सब चीज़ें क्रीज हो जाएंगी. बट थैंकफुली बिकॉज द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस कंसीलर इज़ वेरी थिन, तो अभी तक मेरा जो कंसीलर है वो क्रीज नहीं करा है एंड एवरीथिंग इज लुकिंग फ्रेश. के बारे में बात करते हैं. दिस इज स्विस ब्यूटी का कॉम्पैक्ट, दैट्स इट, नथिंग इज रिटन ऑन दिस प्रोडक्ट, ठीक है. दिस इज इन द नंबर 03 सॉफ्ट बनाना, सैंड एंड बनाना. सो बेसिकली इसमें ना दो प्रोडक्ट्स हैं. आपको एक साइड पे आपको कॉम्पैक्ट मिलता है एंड फ्लिप करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे बनाना पाउडर मिलता है. बट इट्स नॉट माई फेवरेट प्रोडक्ट टू यूज लाइक टू सेट या फिर बेक करने के लिए. इट्स लाइक फिनिशिंग काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है. तो व्हाट आई लव फ्रॉम स्विस ब्यूटी इज देयर दिस लूज पाउडर विच इज सो फाइनली मेड एंड एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. दिस इज लूज फिनिशिंग पाउडर इन द नंबर 02 बनाना एंड लेट्स यूज दिस नाउ. Today we're gonna try this new product which is Swiss Beauty Select Cushion Mousse Eyeshadow, which looks like this. This is the eyeshadow. It's kind of pan eyeshadow, see, which is so beautiful. It looks like it's so pretty. See, this has glitters, shimmers, जो कि बहुत ही सुंदर दिखते हैं. So what I'm going to do, मैं ना इसको सेंटर आईलेट पे लगाऊंगी इस तरह से. एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हेलो आई इफेक्ट इसके साथ मिलता है. कितना सुंदर एक फ्रेशनेस ऐड हो गई इसके साथ. एंड कर्ल वॉल्यूम लैश 4D मस्कारा.
It's giving me length but not the volume what I need. Okay, I'm gonna let it dry and थोड़ा सा टाइम लेके सेकंड कोट अप्लाई करूँगी. देन आई विल सी कि इसके साथ मुझे और कितना वॉल्यूम मिल सकता है. So to line my lips, I'm going to use this Swiss Beauty 2-in-1 lip liner and lip filler in the shade Hot Brown. But this is not a brown shade. Brown. Lipstick, I have this Swiss Beauty Luster lipsticks. Pure Luster lipsticks. Twisted Caramel Pop Cherry. Let's apply Twisted Caramel. Let's apply the second coat of this 4D mascara. No, it's not giving me that volume. It's only giving me that length. But definitely looking very clumpy. No, it's a miss. And this is the final finished look. I hope आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा. अगर हम प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट चलें, सो डेफिनेटली आई जस्ट लव द स्किन टिंट, बट द शेड रेंज इज सो पैथेटिक कि मैं आप लोगों को चाह के भी नहीं बोल सकती हूँ कि आप लोग ट्राई करो, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आपको इसमें अपना परफेक्ट शेड मिल सकेगा, परफेक्ट मैच मिल सकेगा. एंड कंसीलर आई जस्ट लव दैट बिकॉज इट्स सो लाइट वेट. इसका कंसिस्टेंसी भी बहुत थिन है. आप इसको अंडर आइज के नीचे छोड़ो तो वो एक हैक है, जैसे आप उसको छोड़ दो तो लाइक इफ़ यू यूज़ दिस हैक कि इसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ो तो उसके बाद ब्लेंड आउट करो तो आपको कवरेज भी मिलती है एंड अच्छा खासा ब्लेंड आउट ईजिली तो हो ही जाता है एंड डेफिनेटली डजंट सेटल इन योर फाइन लाइन्स. एंड लूज पाउडर इज लाइक बिग हिट. आप डेफिनेटली ले लो, ट्राई करो एंड यू गोना लव दैट. बट द कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने तो आपको ट्राई करके भी नहीं दिखाया बिकॉज आई डोंट वांट टू ruin this look and I just don't use this that much कि मैं आप लोगों को बोलूँ कि ले लो, ट्राई कर लो, बिकॉज आपको बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा इसको यूज़ करने में. सो आई डोंट रियली थिंक कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. I just love this luster lipsticks. I don't like the mascara. I just love this eyeshadow. You can see, मतलब इसको कितने तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इस eyeshadow को. अभी तो मैंने सिर्फ एक सटल सी लुक के लिए यूज़ किया है. एंड ब्लशेज आर सो ब्यूटीफुल, लाइक इतने अच्छे से ब्लेंड आउट हो गए हैं होवा ऑयल की वजह से. एक बहुत ही ड्यूई सी फिनिश इसमें आती है. एंड या मेक श्योर कि आप कॉन्टोर बॉन्ड ज़रूर ट्राई करो. ये पैन स्टिक ज़रूर ट्राई करो. एंड या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई जस्ट हाँ ओके दिस आईब्रो पेंसिल डेफिनेटली इट्स अ बिग हिट फॉर. सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन करके अपना फीडबैक जरूर से शेयर करना. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन बाय.